स्वस्ति नामुखा विश्वेना स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टदेवे स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम बोधस्वामृष्टिमातरा शुभं यावामोदितेषुजत्वया अग्निदेवादनवस्वचक्षो विसुरो देवावसावन्य ओम भद्रं गणवे सूर्यं देवावज्रं भगवाक्षवीर्यजत्रा स्थिराय रंगेषु सुवान् सस्तनु विद्यसे मयि देवैकं जदायो ओम शतमेन्दु शरदों दिदेवादत्कामश्चक्रागण सन्तनूना पुत्रासो चक्रपितरो वन्देमानो मध्यारे विघ्नतार्यो गन्धो अदित्यजावरदितेरन्तरिक्षवदिते माता सविता समुद्रा विश्वे देवादिति पंचजनादिति जातमदिति जनित्कम्मा ओम यहु शांतिरंतरिके वो शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदया शांति परस्परया शांति विश्वनिवाह शांति ब्रह्म शांति सर्वांगो शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेवि ओम जतो जलस्तमयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नक्रुजाभ्यो भैंसपशुभ्य ओमेन बद्धोनि राजा दानवे द्रोणावलते नत्वांवानि रक्षे माजमाज ओम यावद् भूमण्डलं दत्ते सिसलकाण्डं तावतिष्ठं दिवे दिव्यां सन्तते पुत्रपुत्रे ओम जग्नेन जग्नमस्तं तद्देवस्थानि धर्माणि कृतमन्यासते नागमहिमान सचन्नितच्चपुते स्वाद्याः सन्ते देवाः ओम मदभ्याः ओम मदभ्याः समृता पृथिवीर्षा विश्वकर्मणा समर्तताग्रे तशतष्टाविदद्रूपमेति तन्मत्तस्याजालमग्रे ओम जो देवेभ्यो आत्मनि जो देवानां पुरोहित पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमोनुच्चाय ब्राह्मणे स्वस्ति स्तुयाविना साक्षादं कल्याणनिजाविनायकस्ते त्वां त्वां स्वस्ति त्वं तुला मंत्रार्था सबला सन्तु सन्तपूर्णा मनोधा सत्वां बुद्धिना सुस्तु वित्राणहं हृदयस्तव ओम जग्नेना जग्नमसन्त देवस्थाने धर्माणि प्रथमन्यास तेनागमयमानः सच्चन्त चपुर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः ओम मदभ्याः समृता पृथिव्यै विश्वकर्मणा समर्तताग्रे दशतष्टाविदद्रूपमेति तन्मर्तस्य आजानमग्रे आदित्याद्यारासुरे सूत्रासुरे सर्वकामप्यश्यन्तु सर्वे जनाः सुखदो गन्धो Coming sir. स्वस्ति स्तुतिः साक्षात्कर्मकल्यं विद्याविद्यां स्वस्ति मंत्राराभासं संपूर्णमलोधा सब लोग इनको टच करते हैं अक्षदां गृहीत्वा ओम मानो वज्राग्रदो धन्दविशदो दब्दासु अपरिदासु उद्भिदा ओम देवानां जरा सद्मिदवृद्धे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां वज्रासु मते रुचितां देवानांगो रातिरविनो निवर्ततां देवानांगो सख्यं विसेदिना व्ययं देवान् आयुर्तिरं तु जीवसे
तन्पूर्वधानि वधाहुमहे व्ययम्भगं मित्रमदिते दक्षमस्कृतम् आर्यमणं वरुणङ्गो सोममस्विना सरस्वतिना शुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथवे तत्पिताद्यौ तद्रावाण सोमसुतामयो भुवस्तदस्मिना श्रोतन्दिष्टाजयम् रविशानं जगतो सरस्वतीर्यं चेन्वो सेहुमहे व्ययं मुखानो यथा वेदशापसद्विद्ये दक्षिणप्रायुधत्वस्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो वृषभाः स्वस्ति न मुखा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरे वन्दितभव्यरूपं मुक्तिं च मुक्तिं ददामि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम गंगेश्वर निश्चय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्ध्यं करो। ओम यज्ञेन जगन्मसन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यास तेनागा महिमानः सच्चन्तैक्य पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः। ओम मतभ्याः संवृता पृथिवी शासन् विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तष्टाविदधोपमेति तन्मर्तस्याजानमग्रे जो देवेभ्यो वातपते जो देवानां पुरोहित पूर्वे जो देवेभ्यो जातो नमो रुच्याय ब्राह्मणे। ओम कलशाधिष्ठ देवताएभ्यो नमो कलशपात्रदाय। ओम कलशाश्याम वे विष्णुमण्डले कलशवास्तावने तत्र ब्रह्मा मध्यपात्र स्तुतिका कुक्षो कुसागरा सर्वसप्तदिवो सुंदरा वेद यजुर्वेद सामवेद गौण अंगेश्वर सदाश्रयका शंकर समस्तात्रिका के साथ की शांति पुष्टि करता आयान तो यजमानस्य द्विदक्षे कार्या अंगेश्वर निश्चय वर्गोदावरी सरते नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्ध्यं करो। ओम गंगेश्वर निश्चय वर्गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्ध्यं करो। ओम पूर्वे ऋग्वेदार्वेदं पूजयामि। ओम दक्षिणे यजुर्वेदार्वेदं पूजयामि। ओम पश्चिमे सामवेदार्वं सामवेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्वेदार्वेदं पूजयामि। ओम कलशमध्ये पाम्परिवं वरुणं पूजयामि। ओम कलशाधिष्ठ देवताएभ्यो नमो नमः। ओम अभिलाषा गुलालंचा जुवा चंदन वियोजा सुंदरेण समयितं प्रेतां परमेश्वरः। ओम यज्ञेन जगन्मसन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यास तेनागा महिमानः सचन्तैक्य पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः। ओम मानसो के तन्ये मानायुखि मानो गोखमानो श्वेकुलिका मानो विरामरुद्रभामिनो यदि विक्मन्तः सद्विद्वावामे दोनों आँख पे दोनों कान पे। ओम अपैक्यो वा सर्वसाधनोऽव्या यस्मै पुण्डिकाक्षा सर्वायाजन्तरसुये सर्वे पैक्यमस्तु। एक चौथ बांध
ओम विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्य पद्मास्य अद्य श्री ब्रह्मणे द्वितीयवादे श्रीते श्वेतभागवे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टादश शान्तिदं कलियुगे कृतं चरणे भूलोके भरतखण्डे जामुद्वे उत्तरं मेघाखण्डे अट्लाण्टिकोशर पश्चिमे तीरे न्यूरा श्रीराम फ्रैंकलिन पार्क मध्ये ओम शौलकोट ओम काश्यपोत्रोत्पन्न द्विपुरुषे शाखाय पश्यरागारस्य आपका शुभ नाम ओम काश्यपोत्रोत्पन्न त्रिपुरुषे शाखाय पश्यरागारस्य नरेंद्र भाई चंद्र भाई नाम यजमान आपको बोलना है मम मम आत्मन श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति हेतु अध्ययने विक्रम संवत 2078 सार्वरी नाम संवत्सर सत संवत 1944 लव नाम संवत्सर वर्षा ऋतौ दक्षिणायने मासाना पुण्यपवित्र श्रावण मासे कृष्ण पक्षे नवमी आया आनंद महोत्सव नवमी आया शनिवासरे मम अश्य प्रेतस्य सरला रानी प्रेतस्य प्रेतत्व निवारणार्थम असद्गति निवारणार्थम सद्गति प्राप्ति हेतु अध्ययने षष्ठ पिंडाकर सहित अग्निदाह कर्म अहम च करिष्ये तेन कर्मांग देवता पापाः विष्णु देवता प्रियता नमः। आप खड़े हो जाओ। खड़ा होने का प्रॉब्लम है नहीं इनको दे इधर चले जाओ माता जी और उनके मुख के अंदर ही कोई संकल्प का जब ओम यज्ञेन यज्ञमसंतदेवस्तावे निर्माण कृतवान्यास तेनागमयमान सचन्द्रकपुरे स्वाद्याः सन्ति देवा। बस आ जाओ। लग दो वो हाथ ऐसे ये चमक पानी चला जो ग्रंथि है ना गांठ है ना उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का आवाज
ओम जगन्नाथ जगमसंत देवस्थान निर्माण कृतमान्यालते नागमयमान सचंदर प्रवेश काज्यः सन्ति देवा ओम ग्रंथि मध्ये ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणा नागामि साध्याय पूजयामि तीन टीका लगा ओम ग्रंथि मध्ये विष्णुवे नमः विष्णुमामि स्थापयामि पूजयामि ओम ग्रंथि मध्ये ओम रुद्राय नमः रुद्रमामि स्थापयामि पूजयामि चावल ओम ओंकाराय नमः ओंकारमामि स्थापयामि पूजयामि ओम वायुवे नमः वायुमामि स्थापयामि पूजयामि ओम सूर्याय नमः सूर्यमामि स्थापयामि पूजयामि ओम पंचमसुभ्यो नमः पंचमसुभ्यं भागामि स्थापयामि पूजयामि ओम अष्टमसुभ्यो नमः अष्टमसुभामि स्थापयामि पूजयामि ओम सप्तसागरेभ्यो नमः सप्तसागरानां स्थापयामि पूजयामि ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः एकादश रुद्रानां स्थापयामि पूजयामि ओम अनिलाय नमः अनिलमामि स्थापयामि पूजयामि ओम वायुवे नमः वायुमामि स्थापयामि पूजयामि ओम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषं आयामि स्थापयामि पूजयामि ऐसा सूर्यनारायण भगवान के सामने ओम नौ राम सर्वेषां सूर्यादीनां पृथग् दोषा राजन राज के सत्यम नाम पीड़ानाशाय राजन नामानि समर्पास्ता सूर्यादीनां च सर्वेषां पीड़ानश्यन्ति सर्वदा आदित्य सविता सूर्य पुषा कैसे डोरे भगष्टष्टाय मानसो एलिस्ते जो नित्यानि दिन नातो दिन करा सप्त सप्ती भ्रातराय वासो वेद कर्ता वेदापद्वान हरिदर्शकाल वक्त कर्म साक्षी जगपति पद्मिनी भूत गोवानु भास्कर करुणाग्र द्वादशात्मा विश्वकर्मा लोहितांगा समानदा जगन्नाथो दक्ष कालात्मा कश्यपात्मज भूतास्त्रय गणपतिस्तारो लोकनमस्मदा जमा कुशम शंकाशो बाष्पानादि तीरंधर द्वांतेक्षे सर्वात्मा लोकनेत्रो विकार्दन मार्तंडो मेरसो सप्तो लोकदाब्द जगत्कर्तान साक्षी सर्वश्र विजाय सत्रस्मिष्टानि भगवान भक्त सर्वमे वास्वानादि देवश्च देवदो दिवाकरत मंत्र व्याधि अर्था कुष्ठ विनाशका चराचरात्मा में केमितो शरणकर्ता लोक शोका पार्ता च कमलाकरात्मा भू नारायण महादेव रुद्र पुरुषेश्वर जीवात्मा परमात्मा का सुष्मात्मा सर्वतों का जो नलायमश्चैव नैरुतो गुणोनिल श्री देशाने नुचबो मसुम्योर कवि सावरे वेदों ददाति तो काला कालात्मकैव सर्वदेव मयदेव कृष्ण काम प्रदायक ओम यज्ञो वैदम परमं वैद्यम यावरे यशं पुरुषात् आयुष्यं उग्रं प्रतिमुञ्च शुक्रं यज्ञो वैदम परमस्तु तेजा अभी ये कोनी है ना इसके अंदर डालना है इसके अंदर ये जरूर डालना है ये कोनी अब सर बस छोड़ हाथ डाल ऐसे इसके अंदर भगवान विष्णु का आवाहन है।
देव्यैस्तवै वन्दे शाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ इदं विशोचकवेत्रैदानदेवदं सर्वनमश्चपङ्गुसुरिस्वा ते विदाक्षक्रमे विष्णु गोपादाभ्यातो धर्माय दार्यन्तर्विष्णु परमं पदं गो सदा पश्यन्ति सूर्यादि चक्षुरार्धम्। आप दोनों भाई को बोल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्यारह बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पं समर्पयामि। फिर से चावल लेना है। ओम सच्चिका प्रकाश सच्चाक्ष सत्यवाद सबोमिनो सर्वतः स्मृत्वादेश्वर सांगुलम्। ओम पापाहमा विष्णुहे नमः। आसनं समर्पयामि, हस्ताक्षदां समर्पयामि। एक चम्मच पानी भर के रखो। ओम प्रुवे वेदंगो सर्वं यत्पुजं यच्च भाव्यम् उदमृतत्वाशेषानो जलन्नेनातिरोति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाद्यो वाद्यं समर्पयामि, पाद्यार्थे शुद्धाग्निं समर्पयामि। फिर से एक चम्मच पानी भर के रखो। ओम एतावानस्य महिमातो जायां शुक्रपादोश्च सुभूतानि पादश्चान्तन्दे। ओम पापाहमा विष्णुवे नमो नमः। आसनं समर्पयामि, आस्तार्थे आचम्यं समर्पयामि। फिर से एक चम्मच पानी पकड़ के रखो। ओम के बाद उदय पुर्गापादुष्यावत्तरा तदो विक्रम व्यक्राम सासनानुस्नेभि। ओम पापाहमा विष्णुवे नमो नमः। मुखे आचम्यं समर्पयामि, आचम्यार्थे शुद्धाचम्यं समर्पयामि। फिर से एक चम्मच पानी पकड़ के रखो। ओम ततो विराजाय विराजोति पुरुषसरात्मक्यश्चत पश्चात भूमि बलोबुला। ओम पापाहमा विष्णुवे नमो नमः। हस्तोर्घ्यं समर्पयामि, अर्घ्यान्ते शुद्धाचम्यं समर्पयामि। फिर से एक चम्मच पानी पकड़ के रखो। ओम तस्मादश्चायाय अंतजे के चोव्यानदा गावो जने तस्मात् जाता जावया। ओम पापाहमा विष्णुवे नमो नमः। शुद्ध जलं स्नानं समर्पयामि। एक चम्मच पंचामृत। ओम पया पृथिव्यां पयोदेशो पयोदेभ्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिसहस्रन्तुमह्यम्। ओम पापाहमा विष्णुवे नमो नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते 2 चम्मच पानी। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाचम्यं समर्पयामि। फिर से 1 चम्मच पंचामृत लेना है। ओम कामधेनु सत्पन्नं सर्वेषां युगपावनिर्देतुष्यपस्नानं। ओम पापाहमा विष्णुवे नमो नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते 2 चम्मच पानी। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाग्निं समर्पयामि। फिर से 1 चम्मच पंचामृत लेना है। ओम पयसस्तु समभूतं मधुरं शशिप्रभं दज्जानितं महादेवस्थानात्मतेराधापा। ओम पापाहमा विष्णुवे नमो। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते 2 चम्मच पानी। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाग्निं समर्पयामि। फिर से 1 चम्मच पंचामृत लेना है। अभी
ओम तर्पुष्पासमुदं सुस्वादमनोदो तेज पुष्टिरकर्ण्यं स्नानागतेरादामा ओम पापाहामा विश्वे नमो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते दोषवत्पानि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धात्म्यं समर्पयामि। फिर से एक चम्मच पानी लेना है। ओम 160 सुदूता सर्वदा पुष्कार कामला आदि स्थानार्पयामि ओम पापाहामा विष्णुवे नमो नमः सर्वदास्तानं समर्पयामि सर्वदास्तानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धात्म्यं समर्पयामि। और बोलते रहना ओम विष्णुदेव नमः ओम विष्णुदेव नमः ओम विष्णुदेव। अगर वो नहीं आपको आता है ओम नमः शिवाय ओम महादेव जी देवादी देव। ओम नमो वाय सर्वाय रुद्राय वरदाय वसुनामपति नित्यं ग्राय चवर्देन कंटिन्यू महादेवाय विवाय त्र्यंबकाय शिवाय शैशानाय मगधाय नमस्ते उदादिने कुमाराय गुरुवे नित्यं नीलदेवाय से विरोहिताय दुराय व्याधिने नवराजे नित्यं नीलशकंदाय सुरीने दे सबसे अब जय गो कैट के ने क्या ज्यादा के सुनी चिते अच्छी ध्यान में गावत के सर्वदेवा सुराय जवशु अभ्य मुंडाय जटिले ब्रह्मचारिणे तत्तमानाय संजय दमनियाय जियाय जब स्वात में विश्वसुजे विश्वभावते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभेदवा पंचवत्काय सर्वाय संग्राय शिवाय नमस्तु वाचस्पति ज्ञानापते नमो नमो विश्वास्यपते महतांपते नमः नमः सत्कर्षिताय सत्यमुद्वन्मय सत्कर्णितपादाय नमः सांख्याय कर्णे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय भक्तानं कपितं नित्यं सिद्ध्यदानागा प्रभवे ओम सुप्रामहादेव वासुदेवासारला प्रसार्या मासुदलासस्तोपलभ्यते ओम इदं विश्वंसुमे तेजं समनवश्य पांगो सुरेश पाओं के विलाविष्णवे विष्णु गोपादाभ्य अदो धर्माणि राजंतर विष्णु परमं परम सुला पश्यन्ते सूर्या दे चक्षुरा धम्म ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनेन कर्मणा कृतेन पापाः विष्णुदेवता प्रियतां नमः। ओम सुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिमानस्तास्मिरा श्वेताक्षरुद्राय नमस्ते कन्यामावलिप्ता नभो रूपाः पार्जन्या। ऐसा भगवान को ओम सर्वभूषाद के सम्मे लोकलाचार्यवाणे मयोपपादिते तुभ्यं वास सहित प्रतिग्रहताम्मा भगवान को कहना वस्त्रोपस्थान्ते रक्तशुद्धं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतान्ते उपवीतं समर्पयामि। भगवान को टीका लगा लो।
चंद्रम चंद्रम निगंधार्य सुंदर श्रेष्ठ चंद्रम प्रदीयताम ओम माल्या देवी सुगंधेनी मालद्वारे वैभवमयास्तानि पुष्पाणि पूजा कर्म समावे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विष्णुवे नमः ओम विश्वस्ते नमः ओम वशत्काराय नमः ओम भूतभव्याय नमः ओम भूतभृदे नमः ओम भूतभृदे नमः ओम भवाय नमः ओम भवात्मने नमः ओम भूतात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम मुक्तानां परमगते नमः ओम अव्ययाय नमः ओम पुरुषाय नमः ओम साक्षिणे नमः ओम क्षेत्रज्ञाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम शर्वाय नमः ओम शिवाय नमः ओम सार्वे नमः ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ओम अभीष्ट सिद्धिं मे देहि सर्वसर्वभूत्या सर्वेतुभ्यं समस्तार्वान् समस्तवर्णदेवताभ्यो नमो नमः। ओम कृष्णा सर्वदेवानां वैत्रावणीता कृष्णान्देकं वैत्रमण्डले देवदेसा ओम श्रीकृष्णोर्लोवतः। ओम एतावाश्यमय मातो जाया शुक्रपादोश्य भूतानि शिवादश्चांडदं दिवे। उधर आ जाओ, दोनों हाथ पे ओम नवदीता सत्वन्नम सर्व संतोषकातम द्यूतम तभ्यम वदाश्यामि स्थानहारकपतिग्रहताम। आँख है ना, आँख के कुछ इधर इधर थोड़ा सा चलो टिका लो। ओम स्वस्ति न इंद्रो, तीसरे तीसरे रिंग फिंगर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषवाः स्वस्ति न भुगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादक्षो अधिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलो साथ में पानी ले लो। राइट राइट
ओम विष्णु श्रीमद्भूतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञात्मनश्चाद्य श्री ब्रह्मणे द्वितीयवादे श्री श्रीपादवे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितम कलयुगे कृतं चरणे भूलोके भरतखण्डे जाम्बुद्वे उत्तरं मेदिकाखण्डे अट्लाण्टिक ओशन पश्चिमे तीरे न्यूदा सीधा फ्रैंकलिन पार्क मध्य ओम काश्यपौत्रोत्पन्न ऋषिवृषे दिशाकायत्यश्च रामदासश्च नरेंद्र भाई चंद्र भाई नाम यजमान ओम विष्णु श्रीमद्भूतो महापुरुषस्य विष्णुआत्मनस्य विक्रम संवत 2000 ना सार्वरी नाम संवत्सरे शक संवत 1944 प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ मासानां श्रावण मासे पृष्ठपक्षे अष्टम्यायां शनिवासरे रोहिणी नक्षत्रे कौलव योगे बालवकर्णे वृषभ राशि स्थिते चंद्रे सिंह राशि स्थिते सूर्ये मीन राशि स्थिते देवगुरु बृहस्पति शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ मम अस्य स्वर्गस्थ मातृषि सरला राणी प्रेतस्य प्रेतत्व निवार्थम सद्गति प्राप्ति हेतु षष्ठपिंडा कर्महं च करिष्ये। ओम विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलो एक चमच पंचामृत। ओम पया पृथिव्यां पयावदेशो पयावदे मुख के अंदर ओम पया पृथिव्यां पयावदेशो पयावदिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयस्पति प्रतिशा स्वन्तुमयम्। ओम विष्णु राघव विष्णु च प्रेत विष्णु सुरसि विष्णु दूसे वैष्णवते वैष्णवे त्वा। अब भाई सब इधर दोनों दोनों साथ में खड़े। पानी पकड़ के ओम इदम विष्णु। जो पहला पिंड है वो शव नाम का पिंड है, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद वो शिव जी के अंदर शिव चला जाता है, जीव शिव के अंदर चला जाता है। निरंजनो निराकार एको देव महेश्वरा मृत्यु मुखारगतम प्राणम बलाद आकर्ष लक्ष्यते। निरंजन निराकार महेश्वर, इनका स्थान कहाँ पे? कैलाश पर। स्मशान भूमि। स्मशान भूमि हर हमेश वो भभूति लगाता रहता है। इसके लिए जो पहला पिंड जो सबके स्थान पे रखते हैं उसको शव नाम का पिंड बोलते हैं। ओम इदं विष्णुचक्रमे जयदान देवदम श्रवणवश्य पंगुस्वरिस्वा। ओम तेन बुधा विचक्रमे विष्णु गोपादाभ्यतो धर्माय दायन तद विष्णु परमं परंगो सदा पश्यन्ति सूर्यादि चक्षुरार्धम। पहले पिंड पे ये पिंड पे ओम शव नामेश देहे पिंडः। ओम पया पृथिव्यां पयावदेशो पयोदिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रतिशा संतु मह्यम्। ये सब है। पहली अंगुली और अंगूठा वो दोनों से लेके पहली अंगुली ये और उनके पे ऐसे दबा देना। लो एक तुलसी का पौधा, तुलसी। ओम तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरी बहुमुक्ष प्रधान चैव त्वं भूमि स्थापयामि हम।
सिंदूरम समर्पयामि। चंदनम समर्पयामि। पहली अंगुल से, पहली बार। द्वितीय पिंडा ओम एतावादश मे माधोजांश मृगा पादश भूतानि दिवादशांतंदिवे। चौखटे पांथग्राम एषरे पिंडः पिंडोपरि सरस्वाम समर्पयामि। ओम अपसर्पन्तु दे भूताय भूता भव संस्थाय भूता जगतार श्री नश्यन्दो शिवाज्ञया। अक्षतान् समर्पयामि। ओम अक्षराश सुरेश्रेष्ठकंकमोक्तासो विजामयानि विजाभक्त्या गृहाणि परमेश्वर। तृतीय पिंडा ओम त्रिपादोर्ध्वोदय तुर्गा पादो श्यावत्कनागतो विक्रम यक्राम शासनानस्ते अभि। चौराहे पांथग्राम चौराहे खेचरनाम एषते पिंडः पिंडोपरि सौभाग्य परिमल द्रव्याणिं समर्पयामि। पिंडोपरि तुलसी दलानिं समर्पयामि। पिंडोपरि भृंगराज पुष्पं समर्पयामि। पुष्पम की पाखंड। पिंडोपरि भृंगराज पुष्पम समर्पयामि। चतुर्थ पिंडा ओम अपसर्पन्तु दे भूताय भूता भव संस्थाय भूता जगतार स्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। विषामे भूतनाम एषते पिंडः पिंडोपरि जलधारां समर्पयामि। पिंडोपरि पंचामृत स्थानं समर्पयामि। पिंडोपरि चंदनं समर्पयामि। पिंडोपरि तुलसी दलानिं समर्पयामि। ओम संख्याता सहस्राणि जय रुद्रादि ओम याम तेखांगो सहस्रयोजनेव दंडानि तन्मसे। श्मशाने वायुनामेशरे पिंडः पिंडोपरि सौभाग्य परिमलद्रव्याणिं समर्पयामि। पिंडोपरि भृंगराज पुष्पं समर्पयामि। ओम शन्नो देवी अभिश्यावो अंधो वीरये शयोरविस्त्रवन्दो नः। शवहस्ते साधकनामेशते पिंडः पिंडोपरि चंदनं समर्पयामि। पिंडोपरि भृंगराज पुष्पं समर्पयामि। ओम अपैत्रापैत्रो वा सहस्तावधो व्याया स्प्रे पुण्डिकाक्ष सभाया अभ्यंतर जोचे। यहाँ पे ओम सर्वे पैत्रमस्तु। देखो अभी ये पिंड है ना, वैसे ही लेना है, वैसे ही और वैसे ही रखना है। हाथ उल्टा मत करना। नो ओम नमस्ते रुद्र, हाथ लगा के रखो। ओम नमस्ते रुद्रमंजोदोतय वेदवा बाहुभ्यां मुते नमः। शवस्थाने रुद्रनामेष्टे पिंडः पिंडोपरि पयोदारां समर्पयामि। वो थैली लाओ, वो कोकोनट लाओ।
दोनों बाएं हाथ से लगा के रखो, यहाँ पे रखो। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, इधर पाँव दाहिना पाँव। ओम एतावानशमे माधोजाय शपुरक्षपादस्य सुभूतानि त्रिपादश्चान्वतन्ति वे। ओम द्वितीय पिंडा, नहीं ऐसे ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे ही छठा नो नो छठा ऐसे ही, ये उल्टा हाथ है, ये उल्टा हाथ, अब ऐसे ही पकड़ना है, ये वैसे ही रहो, नहीं आप उल्टा करते हो, ये ऐसे, अरे छोड़ो, ये ऐसे। ओम एतावानशमे माधोजाय स्फुर्गः पादोश्चौ सुभूतानि त्रिपादश्चान्वतन्ति वे। आ जाइए, एक कोकोनट दे दे। पान्तकनामेशते पिंडः। ओम वया पृथिव्यां वयो गदिशो वयो दिव्यान्तरिक्षे वयोधाः पयस्पति प्रतिष्ठन्तु मह्यम्। तृतीय पिंड। ओम त्रिपादोर्ध्वा उदयत्पुरुषः पादोश्यः भूत्मनः ततो विख्यं व्यक्राम शासनामस्ते अभि। चौराहे खेचरगामेश्वरे पिंडः। ओम गंगे यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं करो। चतुर्थ पिंडः। उल्टा हाथ मत करो, हाँ ऐसे। ओम संज्ञाता सहस्राणि जे रुद्रादिवं याम तेखांगो सहस्रयोजते वदन्वानि तन्मसे विषामे भूतनामेशते पिंडः। ओम अपैत्र पैत्रो वा सहस्रावलोभ्य यस्पै पुण्डरीकाक्षस्य बाह्याभ्यन्तरं सुजे। ओम अपसर्पन्दुदे भूताय भूताभौ संस्थाय भूताज्ञकृतारस्ते नश्यन्तु शिवाग्ना वायुनाम एष्टे पिण्डः। यहाँ पे ये पिन को आ जाओ पैसा उल्टा उल्टा उल्टा। देखो आप ये हाथ खड़ा करो, खड़ा करो बस। ओम असंज्ञाता सहस्राणि जय रुद्रादिवं याम तेखांगो सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि शवहस्ते साधकनामेशते पिंडः। ये पिन पे हाथ रखो बस 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 बस। चलो अब ये 20 तक आपको चले इधर इधर आ जाओ। आप सब लोग वैसे अंधी
करके खड़े हो। पंडित जी, अजय दामाद लोग आ सकते हैं? फैमिली में दामाद वो जामान। देखो ऐसे तो शास्त्र की विरुद्ध है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो वर वधू क्यों हो जाती नहीं, आप खड़े हो सकते हैं। है यार। वैसा भी इश्यू छोड़ डाल दो नीचे डाल दो, कोई बात नहीं। ऐसे ही प्रदक्षिण घूमेंगे। हरि ओम मानो वज्राग्रदवो जन्तु विश्वतो दत्तासो अपरितास उद्भिद ओम देवानां यथा सद्मिदवृद्धे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां वज्रासु मतेरुजतं देवानांगो रातिरविनो निवर्तताम् देवानांगो शक्यमुपसेदिनाव्ययं देवम् आयो प्रतिरन्धो जीवसे तां पूर्वदादिवदाहुमाय जयं भगं मित्रमदिते दक्षमस्त्रिदम् आर्यमणं वरुणं भो सोममस्तिना सरस्वतिना सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्नाता पृथ्वी तत्पिताज्यहो तद्रावण सोमसुतामयो भुवा सदस्तिना सुतं देष्णाजुयम् तमिशानं जगतो सस्पति धियं जिन्वमासे हुमहे व्ययम् उखानो यथा वेदशामश्रद्धिद्ये रक्षितप्रायोर्दद्वस्पस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधसवाः स्वस्ति न पुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टदेवे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ वया पृथिव्यां वयोगणेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्सदि प्रदिशस्तु मह्यम्। हाथ लगा। ॐ विष्णुरराटमसि ॐ विष्णुरराटमसि विष्णुः शब्देतु विष्णुः जुहोसि वैष्णवती वैष्णवेत्वा ॐ अग्निदेवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वृषभो देवता दित्या देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सद्योजातं प्राज्ञामि सद्योजाताय वै नमो नमः नमे नमः तीनमय गोश्वाम्भोद्भवाय नमः ओम कालाय नमः बलविकराय नमः बलविकराय नमः बलाय नमः ओम मनोन्मनाय नमः ओम दूरेभ्यो दूरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यो नमो नमः।
रत्ने कल्पितमानसमिव जले स्नानं च विलीव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्रर्चितं पुष्पं च धूपं तदा दीपं देवदयामि देवशुभते रत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे दुधं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पामसम्। आप सब लोग बैठ जाओ। अब आए हुए जो गेस्ट है वो प्रदक्षिणा के लिए आएंगे। अच्छा, माता जी के लिए भाई आए, ओम जम्बकमे अजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्रायुगं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुगं जद्देवेको त्रायुगं तन्नो अस्तु त्रायुगं। पर इशारे के लिए कुछ लाए कपड़ा कुछ लाए है तो इशारे के लिए हाँ कपड़ा ये तो आप लोगों भाई आ जाओ। इधर आ जाओ, आप उधर चले जाओ। तो सारा तो नहीं बनना है, इतना खुला नहीं, वो बस इतना ही रखना। दर्शन करने आना समझा, दर्शन वो मुँह खुला रहेगा, मुँह खुला रहेगा। आप उधर चले जाओ। नहीं 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 ऐसे ऐसे पकड़ के रखो भाई साहब, ऐसे ही पकड़ के रखो। नहीं नहीं ओम शर्वशार्गे सम्मेलो लज्जा निवाणे मयोपवादिते तुभ्यं वाससे प्रतिग्रहराम। ओम वस्त्रोपस्त्रां दे उपवस्त्रं समर्पयामि। ये घी पूरा खत्म करना है, ये दोनों साइड में। ओके सारा डालना या सारा। ओम नमस्ते रुद्रमंजलदोताय नमः बाहुभ्यां मुदे नमः। ओम जाते रुद्र शिवा तनोर्गोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वासन्तमया गिरि सन्ताभिजागशे जामि कुंगिर संतस्ते विवर्गस्तवे शिवां गेत्रतां कुर्माहि मुसिपुरखं जगत्। इधर ओम शिवे नवचु सात्वागिः साक्षावदांसि जठामस्तवमि जगदक्षपङ्गो सुमनास
अद्योचदद्युक्ता प्रथमो देव्यो विककञ्च सर्वान् जम्बयन् सर्वान् जादुरान्योदराचि परासुव असोजस्ताम्रो तो बभ्रो सुमङ्गलाजे चैनाङ्गो रुद्राभितो दिक्षु श्रिता शास्त्रशोवेकाङ्गो हेरिमहै ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षय मेरुते अथोजे यस्य सत्तानो हन्तेभ्यो करं नमः। प्रदक्षिणा के लिए दूसरे लोग आ जाओ। वो फूल पकड़ के लड़की को hold on. Sorry. Are you doing darshan now? Yes. Or speeches first? Huh? Speeches? So Okay. we're doing darshan first. That's what we're Okay, doing. just give me 1 second, I'll make an announcement. I will take a meeting. बच्चों को दे दो मैम। Hold on, I have to make an announcement. Oh, yeah, Because I want to tell people how to go. Everyone, if you could just remain on this side, I will make an announcement on how we're going to do darshan. So if we just be very patient. Namaste. Good morning. On behalf of the family, I would like to take a moment to thank all of you for being here today and supporting the family during this very difficult time. We will begin with darshan, so everyone will be able to come up and pay their final respects. I ask that the family stand over here, the immediate family. And the grandchildren will stand over with the flowers. Right around the corner. Just stand right here. You're good right there. We ask that once you place the flowers, you can greet the family respectfully and then exit on my left side of the chapel. We want to keep the center aisle closed for the live streaming so that everyone can be able to watch. Just watch your foot. Once we have finished darshan, the family will come up for speeches, but I would just like to take a moment to make one announcement for the family. There are 2 signs by the sign-in book. When you're leaving today, the family would like to invite you to join with them for Shanti Path at Durga Mandir tomorrow, Sunday. You can join with them at 2 p.m. So tomorrow, Sunday, 2 p.m., all are invited for Shanti Path at Durga Mandir. So they would like to extend the invitation for you to join with them. And also, we would like to offer our condolences once again. Thank you so much for placing your trust in us. So please, you're welcome to come forward, offer flowers, and then we ask that you exit the chapel on the left side. Thank you. Be careful about that. And you go other side. Krishna
Once again, I would like to thank everyone for showing their support and condolences. I would like to invite everyone to have a seat. At this time, the family would like to have a little bit of time to share her legacy. I'll be in the back. Just one. So I would like Take it to off. first invite Naveen. Good morning, thank you for coming. My first memories of Dadi were when I was 3, 4, or 5 years old. They seem a little bit more like dreams than actual memories at that age, but what I do remember is just her being this beacon of love and strength. That was always there, and you always knew it was going to be there. And then, as I got older, and I heard the term matriarch for the first time, in my mind, it just went straight to Dadi, because that's what she was. She was a strong, loving mother who kept his family together by just love and her blessings. And I know that she's in a better place, and her blessings, which she gave so willingly and so freely, are always with us. And I, somewhat selfishly, feel very fortunate that she was able to meet my son. Thank you for coming. Thank you everyone for coming, friends and family. I don't have anything prepared today, so trying to wrap our heads, our thoughts around what has happened and the fact that she's gone. I remember my Dadi as a very strong woman, very stern but beautiful and classy always. I want to share 2 stories with you that you may or may not find funny, but they definitely make me chuckle. I'm happy that she lived a full life, that she got to be at my marriage, she got to meet her great-grandchildren, and for that I'm very blessed. The first story that I'd like to tell you is one of when we went to India in our summers, and we would stay in Gurgaon with Dadaji and Dadima, and Naveen and I would play outside, and Dadi would be in the kitchen making these lovely meals for us, and she was preparing lunch one day. She must have been in the kitchen for several hours, and Naveen and I were playing outside, and all of a sudden we heard the redi wala. He was the one who sold chaat, and Naveen and I loved chaat, and we went running to the redi wala and begged Mom and Dad to buy us chaat. We ate and we ate and we ate until we were so stuffed. We totally forgot that Dadi was cooking for us, and we went back to the house, and there was Dadi standing at the door with a very stern face. I looked at Naveen, I thought we were in trouble. Do you remember this? And we knew that we couldn't eat the food that she made. And all of a sudden, she gave us this big smile and she said, "Koi baat nahi, shaam ko kha lena." The second story that I remember about Dadi that makes me chuckle is when we went to Six Flags. Buas, Mom, Dad, all of us. We were so excited to go on the roller coasters, and Dadi came with us, and she was in her sari. And we didn't even think that she was gonna wanna go. She was a grandma, and grandmas don't go on roller coasters. And we were at Six Flags, and if anyone remembers Rolling Thunder, was one of our favorite roller coasters. And in a kind of joking matter, we said, "Dadi, chaloge?" Kehti hai, "Haan, kyun nahi? Hum to chalenge." Me, Buaz, Dadi, Naveen, all the kids, we got on the roller coaster, and we had never seen a lady in a sari on a roller coaster. I was wondering what it was that she was gonna do with her sari on a roller coaster.
But no, she got on that roller coaster. She tucked that sari between her legs and she got on the roller coaster. When the roller coaster ride ended, I was a little afraid to look her way. I didn't know if she was gonna curse us out or if she was gonna be laughing. And I turned around and I looked at Dadi, and Naveen looked at Dadi, and she said, "Ek aur baar chale?" After that, I think she went on many of the roller coasters with us. That reminds me of how fearless she was, how strong she was, how much fun she was. And I'm very, very happy that we have all of those memories, and we will cherish them. Thank you all for coming. Next, I would like to invite up Nitin. Thank you all for being here to honor my Dadima's life. It's my great privilege to have grown up with her for almost 30 years. I have fond memories of speaking with her in my broken Hindi, which I came to call grandmother Hindi because Dadima alone had the patience never to make fun of it. I have fond memories of her laughter, which was sudden and deep and often louder than I expected. It's my loss never to have known my Dadaji in the same way, her husband, my father's father, who passed away when I was 9. And it's easy to forget that Dadima, who I came to know in my early life, was at that same time navigating a hard turn in her own. So as frail as she sometimes seemed, I remember her today as an especially brave woman, weathering all manner of changes with extraordinary resolve, and I'm very thankful to have been touched by her love and example. Thank you all. I would like to invite up Amisha. Hi, thank you for being here. I love Dadima. I will miss her. It's a blessing to be raised with a grandparent, and I hope to honor the legacy of my family every day. To share some specific reflections today, I want to start by pointing out how amazing it is to think about Dadima living close to a century. And if I really take the time to conceptualize it, it's so astounding thinking about the world and what it must have looked like when she was a child compared to now. She lived through partition, several big moves, several tragedies, many triumphs. I still have questions about what life looked like through her eyes. And though I was very lucky to have heard many stories from her, it'll never feel like enough. So much of how we understand ourselves is through narratives about the past, where we come from and who we come from. Though I hate not knowing all the specifics of her life, several general feelings come to mind when I think about Dadima. I was 5 and my brother was 9 when she came to the States. She was always very loving, but she became even more animated with us as we grew older. She still gave me the affection of a child as I grew up, always kissing me and laughing. There was never a moment I felt that she wasn't happy to see me, yet I could sense how much she enjoyed a real conversation. She loved talking, and she enjoyed when I could talk back, when I could ask her questions and when she could ask me questions. She was a social being, and she was like that with everybody. She loved her entire family. She loved gatherings and fundamentally appreciated community. Every day that passes, I too become appreciative of community, of family, and of the people who become family. We have relied on people. My entire family truly could not have done so many things without the help of all of the people sitting here and many who are not sitting here. Whether medical advice, medical services, visits to her, or counsel and love, truly all of you have been enormously generous to her and to our family, and I can't thank you enough. Finally, it is personally hard for me to think about Dadi without also thinking about my parents. Again, stories are what shape us, and the stories I've heard most often from my parents as I was growing up in our home were grounded in gratitude. We were very lucky to have had so much time with her.
My father, and even more so my mother, who has supported him at each step, not only taught me about the importance of unconditional love and family and community, but they also modeled it. They've given me a great gift, and I'm very proud to be their daughter. I'm very proud to be my Dadi's granddaughter. At this time, I would like to invite Neil. And we have Rekha and Narinder left. Thank you all for coming to celebrate my Nanima's life and be with my family. We miss her dearly. I met Nanima a little earlier. What I remember is when I was about 7. She would come. We lived in Kansas, which is a little bit farther off. It's west of here. And she would come visit for a few months in the summer. And it was really nice to have someone around because my mom worked a lot, so we would hang out in the day. And to be honest, I don't speak very much Hindi, and she doesn't speak very much English. And we would just sit in the same room, and my dog Benny would be there for some of the summers too, and we would just sit, and it would be very limited conversation. But the really fortunate thing, and this is a good life lesson for me, is that unconditional love is never actually based on how much you talk to a person. So we would just sit there in this room and enjoy each other's company, and those are my best memories. They're simple memories. She would cook lunch. We'd drink chai together, and I think when I think of my Nani, she was physically a small lady, and I was excited that there was one relative I was finally as tall as. But the more I got to know her, the more I think I'm just going to spend the rest of my life trying to measure up to how much of a life she made. I'm grateful for the life lessons. I'm grateful for you all being here, and I'm grateful to get to spend time with my family to celebrate my Nani's life. So thank you so much. And now Rekha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. Om Namo Shivaya. Good morning and Namaskar. I am here, but the thoughts I'm going to share are from all 3 sisters, our dear Neelam Didi, our dearest Alka, and myself. We are grateful to have everyone here, and thanks for all your love and support today. Thanks to you from bottom of our hearts for all your kindness. To both our brothers and our sweeter bhabis, please accept our sincere gratitude for taking so good emotional and physical care of Mom. The fact is, you have always put our mind at ease, and no words we say today will do justice to express our feelings. To my dear husband Sunil, respected Jijaji, both our Mamajis, Ashok Mama, Mahesh Mama, our family and friends here and in India, and all the children of our family, a very sincere thanks for all your support and being with us today in person, online, or through your thoughts and prayers. And now, to our Mehtari, we thank you and Dad for all your love, support, and all the values you gave us.
Yes, we are very sad today that we will not see and talk to you in person. But please know that you will always be there in our hearts, and we will cherish the sweet memories of yours forever and ever. To our Heavenly Father and Ma Bhavani, please take our mom in your care and provide her eternal peace and liberation so that she does not feel any pain due to Moh Maya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah. Om Namo Shivaya. And as our final speech, we have Narendra. The family would like to ask if anyone would like to say anything, or if anyone would like to come up to offer any words. You're more than welcome to at this time. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मम्मी को हम जब हमने भजन ग्रुप चालू किया था तो हम लोग भजन गाया करते थे। तो मम्मी भजन ग्रुप में आती थी और इनके पास किताब थी पुराने भजनों की, तो हमेशा नए भजन गाया करती थी। तो उससे हम लोगों को भी काफ़ी प्रेरणा मिलती थी कि भजन गाएं, सीखें। और जब तक मम्मी नर्सिंग होम में नहीं चली गई, आखिरी टाइम में जैसे भी उनसे भजन गाए गए वो गाती थी। सो हमारा नमस्कार। Well, like Prakash said, that she likes to sing, and she gave us so much encouragement. I remember especially, I know she was diabetes, but she loved to eat sweets. She did not miss a skip. Even Chandra will fight with her and say, "Go, if Chandra is not looking at you, give me some with her." It was so nice that we with her all the time. She gave us so much encouragement. Not only Chandra being son, I second that. We all admire talking to her and getting her blessings. God bless us. And lastly, Narendra. First of all, thank you all. This is a time of a lot of stress, and your presence is good for our morale and gives us the strength to bear this. So really do appreciate it. And just one more housekeeping detail, repeating it. Tomorrow we will have Shanti Puja at 2 o'clock at Durga Mandir, and if at all you can find the time, it will be a great solace for us. Mothers, as you all know, are the greatest blessing in life. There's absolutely nothing that can match it.
She was a kind, caring, and affectionate mom, like most moms are. But we can only talk about us, so we were truly, truly blessed. She lived a full life in her up to her mid-90s, and she had children, grandchildren, great-grandchildren. And so we consider it not a bad time to go, but one does get greedy. You just want more of it. You want more of it. You want more of it. And there is never a good time for your mom or dad to go. So, greedy as we are, what we have left now is just some very sweet and thousands of memories which time doesn't allow to share everything, and these are very, very little things. So let me share a few with you. Ever since mom got confined to bed and she could not go out or anything, we've been having Zoom meetings, where relatives here, brothers, sisters, their spouses, and people from India would join. And, it was every week, fixed time, and she will come and she would laugh, she would talk, and make us really happy. And somehow, and my sisters, my brother may not like it, but she always favored me the most. So during the conversation, she would say, "Narinder, Madhu, bade pyare lag rahe ho," more than that she would say to others, right? Right. So now others would say, what about us? And they would try to trick her to admit that she was partial towards me. But she was so agile that they must have tried like 100 times. She never yielded. And she would give a very diplomatic answer. And, I have witnesses that they never won. She won on that point. So, be as it may, Neelam, Chandar, Alka, Rekha, Madhu, Jiaji, Keshav, and I'm sure I'm going to miss some, Nirja. So, you have to live with this. And I was the favorite son. Now, and she was so up on. She came here in about 1995 when my father expired. And until about a week or week and a half before she departed from us, her mind was very agile. She could recite Hanuman Chalisa from beginning to end, and if you did not stop her, she would do it over. So she would do it twice. And she was a very brave girl, lady. And, when I would ask her, "Mummy, kaise ho? Udaas to nahi ho, ya koi pain to nahi hai, ya kuch nahi hai?" So she will say something, first line I forget, but something about fakir. Kya kahe? Har haal mein mastana. Har haal mein raho mastana. Pehli line mujhe bhi yaad aa rahi. So that's the kind of attitude that she had. I cannot remember, no matter how hard I try, if she ever got mad at me. Mother scold, with they want to put you right. So, but she never scolded me at all.
With my dad, it was a different story. So when dad got angry, she was the one to protect me. And I never saw, hear, or witness my mom or dad raising their voice at each other. They did get, issues, but it was a silent treatment, silent. And now you have 5 kids in the house, and if mom and dad aren't talking, how are you going to run the household? So I'm sitting there, and they'll talk through me. Narinder, apne daddy nu aaya keh de. Or daddy ka Narinder, mummy nu aaya keh de. They're going and I have not uttered one word. So that's the kind of, so it'll go for a day and then get better. So, these are the kind of things that, all right. She was very fond of teen patti, tash khelni hai. And most of the time she had good cards, and most of the time she won, and she could maintain a poker face all the time. You could not, right? Yeah, and she would bluff, she would do all kind of things, but mostly her cards are good. So we always lost too, all right? When I was, growing up, she would try to fulfill all my needs. So I remember that the movies those days were 5 annas. You paid 5 annas and you went to go to a movie. So one time we went and she took me to a movie called Hanuman Janam. So then when Hanumanji is going to fly, electricity went. You couldn't see the movie. We kept waiting for half an hour, 45 minutes, electricity. Those days, it was unpredictable. So we had to come back, but I wanted to see Hanumanji fly. And I'm telling her, we gotta go. And she didn't have. So one day she just took me to make sure that I could see Hanumanji flying. So anyway, she's gone now, memories are left, and I said to God, hey, if there are any flowers there in your garden, please send some of them to her every day and tell her it's from me. Remembering her is easy. I will do it every day. But there is an ache in my heart that will never go away. So, sorry for being a witness to this emotional thing, but thank you very much. Bye-bye. Family and friends, at this time we will be proceeding to cremation. For anyone that came a little bit later and would like to come forward for darshan to pay their final respects, please do so now. If anyone has arrived a little bit later. Please, everybody stand up, please. Shanti, Roshadaya, Shanti, Vanaspa.
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा ॐ सहनावतु शान्तिः सहनौ भुनक्तु शान्तिः सवीर्यं करवावहै शान्तिः तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदिवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वाङ्गो शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेति ॐ जतो जतः समयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलो सब भाई सब ये हाथ निकाल दो भी और वो हाथ डाल दो। ये हाथ निकाल के वो हाथ डालो। अब सभी आओ। ये हाथ से ये पकड़ो और ऐसे कदम चलाओ। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता विशो देवता विद्या देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सद्यो जाता ब्रवज्जामि सद्यो जाताय विवै नमो नमः नमे नमाति नमे भो शिवां भोद्भवाय नमः कालाय नमः कल्विकराय नमः बलविकराय नमः बलाय नमः ओम मनोन्मनाय नमः ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यः घोरघोरतरभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु जगतेभ्यो नमो नमः। ओम अग्निनारायण देवताभ्यो नमो नमः। आप दोनों भाई आगे की साइड में खड़े रहे। दूसरे लोग आ जाओ, जवाई जी आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ और यहाँ से अपन अंदर जाएंगे। Head first. श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। रात्रे निंद्रा दिवसे काम। 11 बजसो श्री भगवान। श्री राम जय जय राम। यहाँ से चल दो और पाँव आगे जाएगा। हमको आगे होना है हमको। आप आगे अभी श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। ओम नमस्ते भगवते तवरक्षं तत्वसीतं केलं दर्काशी केलं दर्काशी
जलोई निकाल वो जलोई 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 ये वाला और अंगूठी कहाँ गई वो पहना ही नहीं मैंने आपने क्या करना वो घास की वो तो अच्छा उसमें पड़ी है और कुर्सी कैसा दिया उधर जहाँ मैं बैठा था ना मैं खास की अंगूठी पड़ी है बाद में वो लंबी हो गई है मेरे ख्याल में। भाई ये इधर रख नहीं अभी वो जलोई भी इधर Stop it. Return it.